All right. Okay, so first of all, I hope that everyone can hear me. Yeah. So this is Ritika, your chemistry educator, everyone. Hi, I welcome you all to this amazing YouTube session of Unacademy Chemistry ICSE Grade 10. So today we are going to study a bit more about analytical chemistry. We already have had sessions on analytical chemistry, and we'll be moving forward taking into account a bit of a revision so that if anyone might have missed the chapter also, they can be on track. Okay, so let me tell you about myself. So I have completed my engineering in electronics and communication, and also been a world competent leader by Toastmasters International. Acha, so students, what you can do is you can join us on the Telegram channel. If you require the notes, if you want the helping notes, you can join this channel of Telegram. Okay, and you can also join the official channel of Telegram, so that basically you can have help in your notes, or you can also stay updated with all the ongoing offers and whatever is going on here at Unacademy. Okay. Alright, Abhi, before starting, there is a very important information for all of you students. Now you can save up to 15% on your Unacademy subscription. Okay, so before July 9, okay, you can actually save yourself from price hikes. Okay, so right now the current price are very low, which can give you savings up to like 4,000 for 24 month subscription, right? So kindly go for it, and also you can get the Creative Corner subscription absolutely free. So there's a lot that you're getting in a very less amount. All right, so you can use my code RITIKACLIVE and get this 10% off. Okay, so we will be beginning with a bit of revision. Whatever we did in our last class, right? तो हम लोगों ने start किया था analysis से, correct? तो analysis का जो basic meaning होता है, it is to determine, or I would say to identify certain thing, correct? If I talk about in the sense of chemistry, अगर हम chemistry के context में बात करें, तो analysis का मतलब होता है determination of chemical components, है ना? किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर अगर हमें कोई सैंपल दे रखा है तो उसमें क्या चीजें, क्या कंपोनेंट, क्या कंपाउंड प्रेजेंट है, उसका determination, it is known as analysis. Okay, now this analysis, it is divided into two categories. ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी हमारा होता है क्वालिटेटिव एंड सेकेंड कैटेगरी इज क्वांटिटेटिव. ओके, सो ये दो टाइप के हमारे पास एनालिसिस होते हैं. ओके, फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, सेकेंड इज क्वांटिटेटिव. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है कि whatever substance is being given to us, उसका एनालिसिस करना in terms of क्या चीज प्रेजेंट है. Okay, so we have to actually identify the unknown substance. Okay, let's suppose आपको एक सैंपल दे दिया, उसमें बोला है कि you have to identify the type of salt. Okay, तो ये हमारा कौन सा एनालिसिस हो जाएगा? इट वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस. ओके, अभी नेक्स्ट बात आती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या आता है? हमें आइडेंटिफाई करना है कॉम्पोजिशन. ओके, दैट इज क्वांटिटी बेसिकली, है ना? तो these are the two type of analysis that we have in the chemistry.
Okay, now if I talk about qualitative analysis, now this is very understood. ऐसे देख कर तो पता चलेगा नहीं कि which type of salt is present, है ना? तो there needs to be certain substances with us कि जिससे कि हम लोग रिएक्शन करवाकर हम लोग पता कर सके, हम लोग मालूम कर सके, we can find out what type of or which salt is present or whichever substance is present. Okay, तो ये रिएक्शन हम लोग करते हैं with the help of reagent. Okay, so what is basically reagent? This is a chemical substance which reacts with another substance, and we get to know that whatever or what particular thing is present in the compound. Okay, तो यहाँ तक we have already studied. Okay, and हम लोगों ने analysis भी पढ़ा था ना. Basically if I talk about what we have already completed in our last class, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका सर्टेन सॉल्ट सॉल्यूशंस पर क्या इफेक्ट होता है. ओके, सो वी डिड सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, and now we will be moving on to the next category, that is we are going to study about the ammonium hydroxide. Okay, तो हम लोग पढ़ते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में. Come on, let's get started. Okay, तो अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले तो फॉर्मूला इज NH4OH. Okay, now in this particular class or in this particular session हम लोग क्या देखेंगे कि if we have been given a particular salt solution, okay, तो उसमें how we will identify कि which type of ion is present. Okay, तो उसके लिए how we can use ammonium hydroxide and how we can find it. Basically this is all we have to do. Okay, all right. So whenever we are adding this ammonium hydroxide to the solutions, we are getting precipitates, right? अभी precipitates of course क्या होता है? These are the insoluble substances which are formed at the end of any particular reaction, है ना? तो अब ये जो हमारा प्रेसिपिटेट होता है इसकी पर्टिकुलर टाइप होती है, कलर होता है, मे बी. ओके, या तो लेट अस टॉक अबाउट कैल्शियम सॉल्ट. ओके, तो इफ वी आर टेकिंग एनी पर्टिकुलर कैल्शियम सॉल्ट और उसमें हम लोग ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर we won't be getting any precipitate. Okay, so this is very important thing. अगर कोई precipitate नहीं बन रहा है, that means it might be a calcium salt. Okay, so we will be having no precipitation. Okay, तो आप कितना भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेंगे, you won't be getting any precipitation in case of a calcium salt. Okay, अभी इसका रीजन क्या है? What is the reason? Okay, now अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जब आयोनाइजेशन होगा तो what we will be getting? We will be getting NH4 plus and OH minus. Okay, अब ये OH minus का जो कंसंट्रेशन है, okay, ये इतना ज्यादा कम है कि ये जो है कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकता. Okay, so because of this low concentration of OH minus from ammonium hydroxide, we won't be getting any precipitate in case of calcium salt. तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन. ओके, और आई वुड से फर्स्ट सॉल्ट. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयरन की. Now iron, as you all might be knowing, it exhibits two valencies, 2 and 3. Okay, so let's talk about Fe2 plus ion. मतलब का कि valency 2, iron 2 salts. Okay, now let us see what will happen in case of 2 valency of iron. So let's suppose we are taking sulfate plus we are adding ammonium hydroxide. Okay, now what we will be getting?
we will be getting the dirty green precipitate of hydroxide, and here we will be getting ammonium sulfate. ओके, तो यहाँ पर ये जो हमें मिल रहा है FeOH whole twice, this will be a kind of dirty green precipitate. ओके, और ये जो है it won't be soluble in water. ओके, so if we are taking Fe2 plus ion या फिर जो भी हमारा salt है उसमें अगर Fe2 plus ion का presence है तो हमारे precipitate का color होगा dirty green, which would not be soluble. Okay, two conditions है, dirty green precipitate, and second is it would be insoluble. Okay, so that will confirm the Fe2 plus ion presence in any particular salt. Okay, next let's suppose our valency is 3, that is Fe3 plus ion, ferric ion. Okay, now what will happen, we will just see what or which color precipitate will be formed. So let's take here ferric sulfate and ammonium hydroxide. And also students, it is advised that go for balanced equations. Whenever you are going for these equations, kindly make it a point to balance them. Okay, चलो, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, we will be getting ferric hydroxide and ammonium sulfate. Okay, अब यहाँ पर this thing, what it is going to give, it is going to give reddish brown precipitate. Okay, reddish brown precipitate मिलेगा, and of course it would be again insoluble. Okay, so this will confirm the presence of ferric ion. Okay, I mean, let's suppose in place of this we are taking some other salt. Okay, let's suppose we are taking chloride. Okay, and ammonium hydroxide. Okay, तो वहां पर भी हमें क्या मिलेगा, we will be getting same product and ammonium chloride. तो इससे we do not have any work with this. हमारा जो मेन प्रोडक्ट है ये है, एंड अगेन इट विल बी अ रेड ब्राउन precipitate which is again insoluble in. Okay, तो ये हो गया हमारा सेकेंड, that is iron. Okay, with valency 2 and 3. अभी 2 के साथ क्या मिल रहा था हमको, we were getting the dirty green color precipitate which was insoluble, and 3 that is ferric के साथ हमें क्या मिल रहा है, we are getting reddish brown color precipitate. Okay, so this was about the iron. Acha, now before moving forward, let me tell you about the limited period offer that we are having over here. Now students, abhi till July 8 there is again one of the very rare and amazing offer that you're having. If you're taking the Plus subscription for 12 months or more, you are getting free subscription for a particular duration, and also you are getting Creative Corner extension. Okay, so Creative Corner is just like your hobby class. Okay, where you are getting different I would say fields. Okay, painting, drawing, poetry writing, sketching, etc. तो यहाँ पर 12 month पर you are getting 1 month free ICSE Plus subscription and 3 month Creative Corner extension. Similarly, 18 पर 2 and 3 months है respectively, 24 पर 3 and 6, 36 पर 4 and 6, and 48 months पर 5 month तो ICSE Plus subscription है and 6 month Creative Corner extension. Okay, so this offer is only valid till tomorrow, that is July 8th. So kindly hurry up and please use my code RITIKACLIVE to get this offer. Okay, चलिए बढ़ते हैं आगे. About next thing, so right now there are amazing offers right now going on. So you can take this combo offer also. When you are taking the ICSE Class 10 subscription for 1 year with IIT JEE or NEET Foundation NTSE subscription,
ये दोनों आपको मिल रहा है फॉर दिस अमेजिंग प्राइस 31,050 रुपीज ओनली। ओके, तो ये सारे ऑफर्स ना बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है अभी, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्विकली सब्सक्राइब एंड टेक दी होल सोल एडवांटेज ऑफ दिस सेशन। ओके, ऑलराइट, नाउ talking about next salt, which is copper. Okay, now Cu2 plus iron. Okay, तो कॉपर आयन जो है हमें कोई पर्टिकुलर सॉल्ट दे रखा है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई, तो लेट्स सपोज उसमें कॉपर है, तो कैसे पता चलेगा? ओके, नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ कॉपर सल्फेट, उसको हमने मिक्स कर दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, तो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट। ओके, तो ये जो हमें मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, इट विल बी अ पेल ब्लूइश कलर प्रेसिपिटेट। ओके, तो ये सबसे पहले तो पेल ब्लू कलर का मिलेगा एंड इफ वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये प्रेसिपिटेट जो है ये क्या हो जाएगा? इट विल गेट डिसॉल्व। ओके, तो वी विल बी गेटिंग द pale blue color in case of copper. So kindly make sure that you remember it. In the case of copper, हमें क्या मिल रहा है? We are getting pale blue color. Okay. So these things will always be same, right? हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी देखा था that जो कॉपर आयन था it was giving us pale blue color. जो फेरस हाइड्रोक्साइड था it was giving dirty green. Okay, the ferric hydroxide it was giving us reddish brown color, है ना? तो this was what we were getting. Okay, next अगर हम लोग बात करें जिंक salts, that is Zn2 plus iron. Okay, so let's suppose we are taking zinc sulfate plus ammonium hydroxide. So what are we going to get? We are going to get zinc hydroxide and ammonium sulfate. Okay, again, so this zinc hydroxide जो है, it will be a white colored precipitate and the property will be jelly like. Okay, so it will be white colored gelatinous precipitate. Okay, and again if we are using excess of ammonium hydroxide, ये precipitate जो है ये क्या हो जाएगा? It will get dissolved. Okay, so this is the basic thing. Okay, and the next one is lead. So Pb2 plus. Now let us see what will happen if we are taking lead salt. तो इफ यू आर टेकिंग फॉर एग्जाम्पल लेड नाइट्रेट, और इसको हम लोगों ने रिएक्ट करवा दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ओके, तो व्हाट विल हैपन? वी विल बी गेटिंग लेड हाइड्रोक्साइड, ओके, एंड अमोनियम नाइट्रेट। ओके, तो यहाँ पर भी हमें ना एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। टू बी वेरी प्रीसाइज इट विल बी चॉकी व्हाइट। ओके, और ये जो है सॉल्युबल बिल्कुल नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने जो जिंक का देखा था वो जेली टाइप था और वो सॉल्युबल था, है ना? और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग द इनसॉल्युबल एंड इट इज नॉट जेली लाइक, इट इज काइंड ऑफ चॉकी व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, so this is, or these are some of the very I would say common ions, right, which can be the part of your examination. Okay, we'll quickly revise and we'll see what happens in case of ammonium hydroxide. Okay, I'm sorry, sodium hydroxide also. Okay, तो चलिए बेसिकली एज आई टोल्ड यू, जो प्रोडक्ट है, जो कंडीशंस है या जो प्रेसिपिटेट है, कलर है, जो उनका कंडीशन है वो सेम रहेगा. ओके, दिस इज हाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू अबाउट द स्पेशल क्लासेस. तो ये जो है हमारी स्पेशल क्लासेस है वेयर यू कैन लर्न फ्रॉम योर फेवरेट एजुकेटर्स. You just need to download the Unacademy Learner app
and we are having various sessions such as doubt session, wherein you can clear your doubts, and if you want to visit the special classes, you can see the links are provided in the description. You can go and watch them. Okay, now why to subscribe to Unacademy? So students, you are getting many things over here. You can learn from your home. You'll be having unlimited access to all the courses. You'll be taught by top educators of India. Also, you'll be having regular doubt clearing session, answer writing session. Your syllabus will be covered. You'll be having all the study material in PDF format. Okay, and also practice test, regular practice test, which will be helping you to analyze and to perform better. Okay, so these are the things that you get in your Plus subscription. Okay, so what you can do is you can take the subscription of any duration that you're comfortable with, 3 months, 9, 18, 36, 48, anything, and then you can use my code to get that extra 10% off. Okay, तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हम लोगों ने ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कंडीशंस देखी थी. ओके, सो it's all same. Okay, same color, same type you will be getting. तो एक एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी देख लेते हैं. Okay, sodium hydroxide, it is an alkali. First of all, what is alkali? It is the soluble base. Okay, तो हम लोगों ने कैल्शियम सॉल्ट के साथ देखा था. कैल्शियम सॉल्ट मतलब Ca2+ आयन. ओके, तो अगर हम लोग लेट्स सपोज कैल्शियम नाइट्रेट लेते हैं, सो इट विल बी CaNO3 होल ट्वाइस, और इसका रिएक्शन हम लोगों ने करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो हमें क्या मिलेगा? वी विल बी गेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में भी. ओके, सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में एक चीज थी कि कैल्शियम के साथ इट वाज नॉट गिविंग एनी प्रेसिपिटेट. द रीजन बीइंग इज जो हमारा OH- का कंसंट्रेशन था वो बहुत कम था. सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर देयर इन द केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. ओके, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग द प्रेसिपिटेट विच इज व्हाइट. ओके, और ये बहुत ही आई वुड से नेग्लिजिबली सोल्यूबल होता है इन द सोल्यूशन, एंड with this we are getting sodium nitrate. Okay, kindly remember to balance the equation. I'm directly doing it, but you balance it properly. Okay, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? आयरन. आयरन just a second. तो आयरन का we know we are having two valency. जो lower valency है which is ferrous, and जो higher valency है which is ferric. तो इन दोनों के साथ हमें अलग अलग कंडीशंस मिलती है. लेट्स टेक द केस ऑफ फेरस फर्स्ट. तो इफ यू आर टेकिंग Fe2+, ओके, लेट अस सी से वी आर हैविंग फेरस सल्फेट. ओके, उसका रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो क्या मिलेगा हमें? हाइड्रोक्साइड जो कि है फेरस हाइड्रोक्साइड, OH होल ट्वाइस. व्हाई? बिकॉज ऑफ द टू वैलेंसी. ओके, तो ये जो है इट विल बी अगेन डर्टी ग्रीन कलर. ओके, और ये जेली जैसा प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट सोडियम सल्फेट. ओके, तो हमारा जो मेन वर्क है वो तो इसी से है, एंड इट इज ऑल्सो नॉट सोल्यूबल. ओके, सेकेंड हम लोगों ने लिया था फेरिक. तो लेट्स टेक फेरिक क्लोराइड FeCl3 प्लस NaOH. अगर इसका रिएक्शन करा दिया तो हमें क्या मिलेगा? वी विल अगेन गेट फेरिक हाइड्रोक्साइड and sodium chloride. Okay, now ये जो हमारा precipitate होगा it will be reddish brown, and again it will be insoluble. Okay, तो ये कंडीशन है यहाँ पर किसके साथ? with the ferric chloride, or I would say ferric salt. Okay, फेरस के साथ डर्टी ग्रीन, फेरिक के साथ रेडिश ब्राउन, दोनों ही इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है. नेक्स्ट कॉपर सॉल्ट, सो Cu2+. लेट्स सपोज वी आर टेकिंग कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. रिएक्शन करवाएंगे, क्या मिलेगा? वी विल बी गेटिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड which is again pale blue in color.
ओके, और ये भी सॉल्युबल नहीं होता है। और इसके साथ हमें क्या मिल जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, SO4 and Na, तो we will be getting sodium sulfate. Okay, so this is the thing which determines or which tells which particular type of salt is present. Okay, उसके बाद we learned about zinc salt, Zn2+ ion. Okay, तो zinc sulfate प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक का जो प्रेसिपिटेट हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में देखा था वो क्या था, इट वाज जेली लाइक। सो अगेन हमें यहाँ क्या मिलेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, सेम थिंग, विच विल बी अ वाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट, और इसके साथ वी विल बी गेटिंग सोडियम सल्फेट। ओके, तो यहाँ पर ये जो व्हाइट जेलेटिनियस प्रेसिपिटेट है इट विल बी सॉल्युबल। ओके, तो अगर दो सॉल्ट्स हमें व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट दे रहे हैं तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट, बाय द प्रॉपर्टी, अगर वो जेली लाइक है, वो सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ओके, उसके बाद आता है लेड सॉल्ट which is Pb2+. So let's take the case of lead nitrate plus सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन, तो क्या मिलेगा, लेड हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा हमें, विच इज अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। ओके, यहाँ पर ना इसका जो टेक्सचर है कुछ चौक जैसा होगा, चौकी व्हाइट, विच विल बी सॉल्युबल। एंड प्लस क्या बचा हमारे पास, लेड काम में आ गया, हाइड्रोक्साइड काम हो गया सोडियम, तो सोडियम नाइट्रेट विच इज दी कलरलेस। ऑल राइट, तो यहां तक आई होप दैट ऑल द थिंग्स आर क्लियर। ओके, सी जो सॉल्ट्स है वो लगभग सेम ही टाइप का रिएक्शन देंगे, वेदर इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम ऑफ द एक्सेप्शंस, जैसे कि जो कैल्शियम था वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं रिएक्शन दे रहा था, कोई प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा था। सो दोज थिंग्स यू नीड टू नो, यू नीड टू नोट डाउन, यू नीड टू रिमेंबर। Okay, so this was a very short and a quick recap and a quick go through to analytical chemistry. We'll be looking forward and we'll be looking for other topics in our next class. Okay, now talking about community, so community is like the group of educators, right? A separate group for every educator. So if you want to receive regular updates, okay, from your favorite educator, if you want to have their notes, practice material, and if you want to share your feedback, you can join the community. So to join my community, you can click on the link which is given in the description box. Also, Bugs Bounty, this is the very amazing opportunity for all the learners. If you see any inappropriate content in the video, you can report it and you can claim your prize. Okay, so the form is given in the description box which you can use. And still, if you haven't subscribed to this channel, kindly go subscribe it, like, share, and keep supporting us. So we'll be meeting in the next class, students. Till then, keep learning, keep studying. All the very best. Thank you. Bye bye. Take care.